Starting off with the first safety measure in mains electricity, जिनको हम कहते हैं fuses. Fuse क्या है? A fuse is a safety device designed to cut off the flow of electricity to an appliance if the current becomes too large due to a fault or surge. Fuse क्या है? हम इसको एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस में इंसर्ट कर देते हैं एक वायर के ऊपर. जब भी आपके पास वायर हीट अप होती है, ये फ्यूज क्या होता है? मेल्ट हो जाता है. अब हमें कैसे पता लगे जब वायर हीट अप होगी? ऑब्वियसली करंट है, करंट हैज एनर्जी, करंट जो फ्लो करता है इट प्रोड्यूसेस हीट. जब लार्ज करंट फ्लो करता है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड. जब लार्ज करंट फ्लो करेगा, इट विल प्रोड्यूस अ लार्जर हीटिंग इफेक्ट. दैट हीटिंग इफेक्ट वुड एक्चुअली मेल्ट द फ्यूज. व्हेन द फ्यूज मेल्ट्स ड्यू टू अ लार्ज करंट बीइंग फ्लोन, वो फ्यूज क्या करते हैं? इट ब्रेक्स द सर्किट बिकॉज द वायर, वो वायर को भी क्या कर देता है? मेल्ट कर देता है. द वायर ब्रेक्स और आपका इलेक्ट्रिकल अप्लायंस इज नाउ प्रोटेक्टेड फ्रॉम बीइंग बर्न. A fuse is a safety device designed to cut off the flow of electricity. अब ये flow cut off कैसे होता है? It is cut off by melting to an appliance if the current becomes too large. How do we protect the appliances? By preventing a large current. अगर आप large current को flow करने से prevent कर देंगे, that appliance can actually be saved due to a fault or a surge. Sometimes short circuits हो जाते हैं, कोई fault हो जाते हैं, और मे बी पीछे से जो आपकी इलेक्ट्रिकल सप्लाई है वहां से there is a large surge of current suddenly and you are not being able to control that large amount of surge. So fuses usually consist of a glass cylinder containing a thin metal wire. ये fuses क्या होते हैं? They consist a glass cylinder होता है, और इस glass cylinder के अंदर we have a thin metal wire. Now, protecting the appliance starts off if the current in the wire becomes too large. The wire would heat up because current flows and flowing current produces a heating effect in a wire. कभी कभार electrical appliances hot हो जाती हैं, the wire heats up. Why does that happen? Because the large current flows. When the wire heats up, the fuse melts. When the fuse melts, it causes the breaking of the wire. क्या होता है? This causes the wire to break, breaking the circuit. आपका circuit में current flow होना stop हो जाता है, stopping the current, and obviously the appliance is actually safe. तो कैसे fuse काम कर रहा है? When you have a large source of current or when you have a large amount of current passing in the wires, it heats up, producing a heating effect. Fuse melts, cuts off the wire, and saves your electrical appliance. This is how it's a whole circuit. Let's say ये आपके पास एक circuit लगा हुआ है, and here we have planted the fuse. This is where the fuse is planted. This is a glass cylinder, and inside the cylinder we have this thin metal wire. The thin metal wire is the one which actually prevents when the fuse is blown, the current flow stops. जैसे ही आपका temperature in the wire increase होगा, when your temperature increases, the wire heats up. Fuse heats up. Fuse के अंदर जो thin metal wire है, वो ज़्यादा sensitive होती है. It melts, melting the wire as well, क्योंकि इसी के through current जा रहा है. When this fuse melts, आपका current का flow stop हो जाता है. The electric appliance stops working, but it is actually safe for तो आपको further precautions या further hazards से आप बच जाते हैं because your electrical appliance is saved by the stopping of the current flow when it heats up. This is how a fuse is used as a safety feature.